Personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? Which option is your right answer? Personal computer PC यूज करूची नंबर ऑफ चिप्स को जहाँ माउंट होई थाए गोटे मेन सर्किट बोर्ड ऊपर दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड. ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. ठीक अछि. मदरबोर्ड को जाय मदरबोर्ड और एटा को PCB आल्सो को जाय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जाय. ओके. नंबर ऑफ चिप्स मींस एथिरे CPU जहाँ को प्रोसेसर को जाय RAM ROM समिति आपनकर पोर्ट्स डिफरेंट पोर्ट्स एंड आपनकर एक्सपेंशन पई डिफरेंट डिफरेंट कोड रो पोर्ट सब एथिरे कोन थाए माउंट होई थाए. That is called motherboard or printed circuit board को है. Next question number 2. Programs designed to perform specific tasks are known as. Programs को design करा जायछि that is perform करिवा पई किछि specific task को. तो सही प्रकार programs को कहजिबो application software. What is software? Language of the computer or collection of programs को software को जाय और intangible part of the computer को software को जाय. Software two types. गोटे होछि application system. Application software जानिले specific task पई यूज करा जाय. एंड कौन है सिस्टम सॉफ्टवेयर आपन को कंप्यूटर को जे रन करेबो मींस हार्डवेयर को मैनेज करेबो लाइक विंडोज डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज. बट आपन को एंड यूजर पई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करा जाय. मन रखंतु द टाइम ड्यूरिंग व्हिच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज प्रोसेस हबा अर्थ होची दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम को आजिबो. एटा कोन को आजिबो एग्जीक्यूशन टाइम इज योर राइट आंसर. ओके. गोटे प्रोग्राम और गोटे जॉब जेता प्रोसेस होची दैट इज एग्जीक्यूट होची को आजिबो. जेमिति आपनकर RTOS रही real time operating system. Next, an approach that permits the computer to work on a several programs instead of one is that is called several programs. आपनकर जो main memory रही main memory रे multiple program को CPU switch करेबो like input output instruction देबो. तो सही प्रकार प्रोग्राम जते बेले रन करिवो मल्टी प्रोग्रामिंग को आजिबो. ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर. ठीक अछि. मल्टी प्रोग्रामिंग इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, the term petabyte refers to. Petabyte means what? 1024 terabyte को petabytes को right. 1024 TB टा हिजो आपनकर 1 PB. ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर. The device that provides information which is sent to the CPU is termed as. CPU को जो इंस्ट्रक्शन दिया जिवो that is called input हबो. ऑप्शन ए input is your right answer. एठी रहला आपनकर यूजर जहां इंस्ट्रक्शन दबो that is को हिजो input एवं इनपुट रो काम होची ताहा प्रोसेस हबो. प्रोसेस हबा परे पुनी सेटा आपनकर स्टोर हबो एवं स्टोर पुनी थरे प्रोसेस को दिबो एवं प्रोसेस को आसीबो दैट इज आउटपुट. दैट इज द गोटे कंप्यूटर रो फंक्शन. क्लियर. सो इनपुट इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज ASIC कोड को यूज करा जाय. ऑप्शन ए ASIC हबो यार राइट आंसर. ASIC रो फुल फॉर्म कोन? ASIC रो फुल फॉर्म होची अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके. एथरे 128 रो कैरेक्टर को यूज करा जाय. दैट इज गोटे कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम कहि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. CAD स्टैंड्स फॉर कोन हबो कोंतु? CAD रो फुल फॉर्म कोन होइजिबो? CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. ओके. CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is required when more than one person use a central computer at the same time? That is terminal. गोटे टर्मिनल रो आवश्यकता अटे. टर्मिनल कोन करिवो? more than one person को allow करिवो यूज करिवा पई simultaneously. ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप्स कैन सर्व एज. मैग्नेटिक टेप्स रो काम कोन कोंतु? आमे जानछन दैट इज स्टोरेज पर्पस रे यूज करा जाय मींस सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहि परिबा. ऑप्शन ए हबो राइट आंसर. मैग्नेटिक टेप्स गोटे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया अटे. नेक्स्ट, which of the printers used in conjunction with computers use dry ink powder. Dry ink powder जाको टनर मध्ये को जाय दैट इज आपनकर लेजर प्रिंटर. ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, ए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर हैज ए वर्ड लेंथ इक्वल टू. आमे जानि सन्ती 1 बाइट्स होची 8 बिट्स. 1 बाइट्स कोन आपनकर दैट इज 8 बिट्स अटे. ओके. ताले 32 बिट कथा को जाउची तो 32 बाय 8 करंतु केता आसीबो 4 बाइट्स आसीबो. 4 बाइट आसीबो हेर राइट आंसर. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ओके. एवं 4 बाइट को गोटे निबल मध्ये को आजे मन रखंतु. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड. जहाँ भी किसी आपनकर एरर आसीबो एरर को कोन को आसीबो? एरर को आसीबो बग को आसीबो. एवं एही एरर जेते बेले आपनकर सॉल्व हुए रिजॉल्व हुए दैट इज डिबग. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर.
The protocol used specifically for exchange of emails is simple mail transfer protocol को यूज करा जाए जहाँ को SMTP कहा जाए simple mail transfer protocol है वो right answer. Next, firewalls are used to protect a communication network against unauthorized attacks हबो. Firewall आपनको सिस्टम को unauthorized access रू कौन करिवो protect रखिवो. Right. Next question number 16. What type of telecommunication hardware allows you to access the web? आपण web को access करिया पई गोटिए modem को install करिवार अछि, that is modulation demodulation. Analog को digital signal रे एवं digital को analog signal रे convert करिवो. both input output भाबरे ए डिवाइस टी काम करे. Next, which of the following is an internet connection option? देखंतु dial up रो connection मध्ये दिया जाय, digital subscriber line जाकु DSL connection मध्ये कुआ जाय, and satellite connection मध्ये रहिछि. So option D all of the above हबो यार right answer. समस्ते गोटिए गोटिए कोन internet connection अटंती. Next, which of the following is not related to information security on the internet? Data encryption होई परिबो, watermarking होई परिबा, and data hiding होई परिबा, किंतु information retrieval हेबो नाही. ठीक अछि, information retrieval डाटा को सर्चिंग एंड ऑब्टेनिंग पर्पस रे ही जनरली यूज करा जाय. हम एटा को पिक करि परिबा. ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following is not a network device? Router, switch and hub. Router गोटे network device, switch हेई परिबो and hub हेई परिबो, किंतु BIOS हेबो नै. बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम टा आपनकर एक नेटवर्क डिवाइस मो, दैट इज गोटे firmware अटे जहा बूट ऑफ ए कंप्यूटर पय यूज करा जाय. जेतले आपनकर बूट ऑफ माने कंप्यूटर जेतेबेले आपण ऑन करंती मींस कंप्यूटर जेतेबेले रन करे सेतेबेले BIOS रो भूमिका थाए. नेक्स्ट, IRC stands for कोन हबो कुहंतु. IRC stands for Internet Relay Chat. Option B is your right answer. मन रखंतु, Internet Relay Chat को हजिबो गोटे प्रोटोकॉल रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन रे यूज करा जाय IRC. नेक्स्ट, which of these is not an internet browser? निम्नलिखित मध्यरु केनटा एको इंटरनेट रो ब्राउजर हेबो नाही. इंटरनेट रो ओके मेगाट्रॉन इज गोटे इंटरनेट रो ब्राउजर नुह. ओके, नेटस्केप, क्रोम एंड ओपेरा गोटे गोटे ब्राउजर अटंती, किंतु मेगाट्रॉन इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर. नेक्स्ट, which one of the following is a search engine? Bing हेबो एको सर्च इंजिन. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड करा दतुवा गोटे सर्च इंजिन होची Bing. सेमती गूगल गोटे सर्च इंजिन. नेक्स्ट कोन तो टेलनेट कोन? क्वेश्चन नंबर 23. टेलनेट, व्हाट इज टेलनेट? which option is telnet? Basically आपण रिमोट लॉगिन पय यूज करंती, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन. सिंपली जदी बुझिबा लाइक आपणकर कंप्यूटर रे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जहा भी इशू रहइबो, आपण कस्टमर सर्विस को जेतेबेले कॉल करिवे, देन सेठारे आपणकर रिमोट लॉगिन एक्सेस जरिया रे आपणकर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेठारे कोन करा जिवो, ओपन करा जिवो एवं जहा भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थिबो ताको रिजॉल्व करा जाय परिबो. इट मींस सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्राम को और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिया पई एठी कोन करा गला ना रिमोट लॉगिन रो एक्सेस निया गला. बट हार्डवेयर रिलेटेड दैट इज सॉल्व होई परिबो नै, आपन को केयर को जिबार अछि. दैट इज टेलनेट. मींस एही टेलनेट गोटे स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन पय यूज करा जाय. रिमोट लॉगिन कोन? आपनकर ऑपरेटिंग सिस्टम को अन्य एक कंप्यूटर रे रन करा जाय परिबो रिमोट लॉगिन जरिया रे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट? व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? जावा भी यूज करा जाय, बट हमें जदी कथा बेसिक लैंग्वेज होचे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑफ राइट आंसर. HTML द्वारा गोटे वेब पेज को क्रिएट करा जाय, दैट इज बेसिक लैंग्वेज. नेक्स्ट, व्हाट इज फिशिंग? कोन फिशिंग कोन? बारंबार आमे प्रश्न प्रैक्टिस करछंती, परीक्षा रे आसीबार बहुत पॉसिबिलिटी रहिछि. फिशिंग होजे मेथड टू एक्सट्रैक्ट यूजर इंफॉर्मेशन थ्रू फेक वेबसाइट. फेक वेबसाइट जरिया रे यूजर रो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करबा होछि फिशिंग. व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए वैलिड ईमेल डोमेन? देखंतु .com वेबसाइट एंड ईमेल्स रे यूज करा जाय. .edu एजुकेशन पय एटा गवर्नमेंटल, बट www हबो नाही, एटा गोटे वैलिड डोमेन नुह. क्लियर? नेक्स्ट, which unit is used to measure the speed of a processor? प्रोसेसर रो स्पीड को मेजर करबा पय हर्ट्ज को यूज करा जाय. ठीक अछि, सुपर कंप्यूटर कोन हबो? दैट इज फ्लॉप्स. मन रखंतु. नेक्स्ट, which file extension is typically associated with a web page? Web page रो फाइल एक्सटेंशन, गोटे वेब पेज रो फाइल केउ प्रकार रो होई परिबो? दैट इज .html. .html मन रखंतु हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जरिया रे गोटे वेब पेज को क्रिएट करा जाय. exe ता आपनकर गोटे कोन एक्जीक्यूटेबल फाइल अटे. ओके, कंप्यूटर रो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जाउ कहते तार फाइल एक्सटेंशन docx गोटे वर्ड प्रोसेसिंग रो फाइल एक्सटेंशन अटे. नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. PDF रो फुल फॉर्म कोन? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हेबो, मन रखिबा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. द रन कमांड यूज्ड टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडोज इज iExplore. iExplore होची तार रन कमांड, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर गोटे ब्राउजर ओपन हबो. वर्तमान इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपण माइक्रोसॉफ्ट रो एड्स भाबरे यूज करूछंती, तार गोटे अपग्रेड वर्जन कहि परिबा. S is used in news articles and documents to make the first character of a paragraph larger, taking off several line of text.
आपण देखिथिबे एडिटोरियल्स रे प्रथम लेटरटा बिग लेटर हेक रहइबो देन तापर किछि लाइन अटैच हेक रहइबो तो सेही प्रकार फंक्शन को ऑप्शन को ऐड करिया पई ड्रॉप कैप कुआ जाय ऑप्शन ए ड्रॉप कैप हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स लिस्ट द हेडिंग एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेज रो नंबर कहि परिबो ऑप्शन ए पेज नंबर हबो गोटे टेबल ऑफ कंटेंट रे कोन थाए तार हेडिंग सहित से हेडिंग ता केते नंबर पेज रे अछि दैट इज हम देखि पारंती द कंप्यूटर सीपीयू एंड रैम आर माउंटेड ऑन मदरबोर्ड रे आपनकर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जाको प्रोसेसर कुआ जाय एवं आपनकर वोलेटाइल मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी माउंट करा था नेक्स्ट इन एमएस एक्सेल डैश चार्ट इज यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम और कैटेगरी जेतेबेले आपनकर ट्रेंड्स ओवर टाइम आसीबो दैट इज लाइन चार्ट कुआ जिवो क्यों चार्ट ऑप्शन बी लाइन चार्ट इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एफएलएसी स्टैंड्स फॉर व्हाट कहंतु एफएलएसी रो फुल फॉर्म कोन होई जिवो एफएलएसी रो फुल फॉर्म होउची फ्री lossless audio codec option b free lossless audio codec hobo here right answer next in a standard keyboard the keys present on the top of the row are called कोन कोन होबो standard keyboard थिबा top रे जो की हमें देखिया पई पाइबा that is function keys केतोटी रहिछि 12 टी रहिछि f1 to f12 पर्यंत 12 टी function key रहिछि next which of the following can be used in formula instead of cell reference आपण names रो range को यूज करि परिबे names होबो here right answer और फार्मूला बदल रे आपण फंक्शन आल्सो यूज करि परिबे नेक्स्ट this memory requires an electric current to retain the information in memory it means one that is volatile memory so here right answer option D have right answer next this contains formatting and designing elements common to every slide in the presentation that is called a master slide Microsoft PowerPoint रे view tab under रे आपण master slide को जाई की आपण layout जाको काजे गोटे स्लाइड रो स्ट्रक्चर को मैनुअली क्रिएट करि परिबे बाय डिफॉल्ट केतोटी लेआउट रहिछि आपनकर 9 टाइप्स रो लेआउट रहिछि मन रखन नेक्स्ट व्हाट इज B2B इन ई-कॉमर्स B2B होछि बिजनेस टू बिजनेस ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर बिजनेस टू बिजनेस ओके गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल located in a different sheet called which option have right answer getting data from a cell that is located in different sheet eta कहजिबो cell referencing option B हेबो यार राइट आंसर cell referencing मन रखंतु ठीक अछि cell referencing कहजिबो एवं यह मुख्यतः तीन प्रकार रो रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहा जाय नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स को नेकी आपण एक चार्ट क्रिएट करिवे कोन क्रिएट करिवे चार्ट सेति पई F11 फंक्शन 11 को आपण यूज करि परिवे F11 की हेबो यार राइट आंसर व्हिच फंक्शन इज यूज्ड to calculate the total number of characters in a cell total number of characters in a cell को आपण जेतेबेले कैलकुलेट करिया पई चाहंती सेति पई len फंक्शन को यूज करन ऑप्शन ए len फंक्शन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट any change in excel worksheet data can be shared with word document by it means simply जदी बुझिबा excel sheet रो डाटा को word document रे शेयर करा जिवो सेति पई ऑप्शन ए रे कहा जाउची inserting an excel file into word that is also आपनकर शेयर हबो linking copied excel data to word document तो एटा मध्ये होई परिबो copying and pasting excel worksheet into word document copy and paste रे जरिया also करा जाई परिबो means all the above is your right answer option D हेबो यार right answer okay next example of non numerical data is data कोन data होची collection of unprocessed items और कहा जाए डाटा होची दैट इज रो फैक्ट एंड फिगर को डाटा कहबो ताले ई डाटाटा होची नॉन न्यूमेरिकल माने कोन नंबर्स आसीबो नाही देखंतु एग्जामिनेशन स्कोर रे नंबर आसे एंड बैंक बैलेंस रे आल्सो नंबर आसे आपन किंतु एम्प्लॉय एड्रेस रे कोनोसी न्यूमेरिकल्स आसीबो नाही दैट्स व्हाई ऑप्शन ए हबो राइट आंसर बट नॉन न्यूमेरिकल डाटा होई परिबो नेक्स्ट ए बूटस्ट्रैप गोटे कोन कहंतु बूटस्ट्रैप होची आपनकर ऑप्शन सी गोटे स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम अटे टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर जहां गोटे कंप्यूटर को रन कराए ठीक अछि बूट मन रखंतु कंप्यूटर जेतेबेले आपनकर ऑन हुए माने रन हुए सेही प्रोसेस को बूट और बूटिंग कहबे एवं बूटिंग दुई प्रकार वार्म एंड कोल्ड बूटिंग ओके नेक्स्ट द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन कहंतु क्यों की स्टार्ट बटन को लॉन्च करिवो दैट इज विंडोज की कह जाय कोन कह जाय Windows key option C is your right answer next in a laser printer the dash transfers the image to the paper क्यों प्रिंटर कथा कहल जाउछि that is laser printer रे
निम्नोक्त मध्यरु केउटा ट्रांसफर करूची इमेज को टू द पेपर रे ओके लेजर प्रिंटर रे ड्रॉप कोन करिवो ट्रांसफर करिवो इमेज टू द पेपर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट data that is copied from an application is stored in the data that is copied हबो माने जो डाटाटा कॉपी हेबो until paste जो पर्यंत सेटा पेस्ट होई नाही that is clipboard रे स्टोर हेकी रहइबो clipboard मन रखो clipboard रे until paste स्टोर हेकी रहइबो which of the following programs compress large file into a smaller file निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रोग्राम कोन करिवो कंप्रेस करिवो गोटे लार्ज फाइल को स्मॉलर फाइल रे दैट इज WinZip is your right answer option A एबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट recently deleted files are stored in recently deleted files recycle bin रे स्टोर हेकी रहे recycle bin माने रखु ओके एंड जदि आपण सेटा को परमानेंट डिलीट करिसंती लाइक शिफ्ट सहित डिलीट को जदि आपण प्रेस करिवे दैट इज परमानेंट डिलीट देन सेटा recycle bin रे स्टोर हेबो नाही using Microsoft Words find and replace feature you can do find and replace feature जरिया आपण कोन करि परिबे find and replace feature जरिया रे आपण रिप्लेस करि परिबे both text and formatting option A both text and formatting को आपण कोन करि परिबे रिप्लेस करि परिबे नेक्स्ट press which key to select different portions of any text by dragging the mouse ड्रैग करिबा ई शब्दटा मन रखंतु आपण ड्रैग करिबा पई ऑलवेज कंट्रोल की रो सहायता नियंती कंट्रोल की जरिया रे आपण ड्रैग करि परिबे नेक्स्ट ए मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट इनटू द डॉक्यूमेंट आपण प्रिंट बाहर करिबा पूर्वरु आपण कोन चेक करंती टू सेव द डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट इंपोर्टेंट बट टू सेट पेपर सेटिंग ओके आपण जो पेपर रे प्रिंट बाहर करिवे तार सेटिंग को देखिबे एंड सी प्रिंट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट जाको प्रिंट प्रीव्यू को जाय means both B and C have a right answer. Option D is your right answer. Word counts future kon hobo kontu. Word counts future which option is your right answer? Option D all the above is your right answer. Okay. Word count future रे आपण जहां भी आपनकर नंबर ऑफ वर्ड्स रहिछि तार इंफॉर्मेशन पाइबे ऑप्शन बी कुछ यूजफुल व्हेन the length of the document is limited to some number of words and display karibo the number of pages then apanakar characters paragraphs and line in the document so ame option D choose kari pariba next question number 60 it is a mark normally round or square dot it is called it is a gote mark ote jota apanakar round kima square ro gote dot ote so seta kon kohajibo seta kohaje bullet option B bullet hebo yaro right answer next question what is the shortcut key for find and replace dialog box बोलतु find and replace रो dialog box को ओपन करिबा पई केउ शॉर्टकट की को यूज करा जाय कंट्रोल प्लस इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपनकर परीक्षा रे एमिति प्रश्न आसी पारे मन रखंतु शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच find and replace dialog box ओपन हबो what is the shortcut key to subscript the selected text subscript करिबा subscript means सेमिति मु लेख देखंतु x2 okay that is subscript a2 that is also subscript तो एमिति गोटे फॉर्मेट रे आपण रखिबा पई कंट्रोल प्लस इक्वल साइन को शॉर्टकट की जरिया रे सबस्क्रिप्ट करि परिबे नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज गोटे सेल रे थिबा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होची देखो सेल रे आपनकर नंबर आसी परिबो एंड टेक्स्ट आसी परिबो तो एथिरे जहां भी टेक्स्ट रहिछि दैट इज लेफ्ट रे रहइबो एंड नंबर राइट रे रहइबो तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर from which toolbar we can change chart type chart toolbar okay easy question chart toolbar को नहीं कि आपण तार कोन करि परिबे चेंज करि परिबे चार्ट रो टाइप को आपण केउ चार्ट रखिबे पाई चार्ट बार चार्ट ओके और जे कोन से आपण चार्ट रे रखिया पई चाहती दैट इज आपण चार्ट टूलबार को नहीं चेंज करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करंतु ए यूजर wish to rename a spreadsheet from a workbook which is the correct sequence of events that he would do for this okay प्रश्न कोन कहूची जने यूजर चाहूची रीनेम करेबो कोन से को स्प्रेडशीट को सिंपली बुझो रीनेम करेबो का कोन से को स्प्रेडशीट फ्रॉम ए वर्कबुक which is the correct sequence रीनेम करेबा पे कोन करा जाई परबो प्रथमे आपण राइट क्लिक करिवे on the spreadsheet tab then select rename
तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। नेक्स्ट WYSI WYG stands for ओके यार फुल फॉर्म कोन हो बोलू WYSI WYG it means that is what you see is what you get ऑप्शन ए हो राइट आंसर मन रखंतु that is the full form। नेक्स्ट an output device is output device कोन हे परिबो always कोन करे processed information from a computer into a form that human can understand ऑप्शन ए कहि परिबा आउटपुट डिवाइस कोन करे सिंपली जदि हमें कहबा आउटपुट डिवाइस रो काम होची आपन को गोटे जने यूजर को कोन दबो से आउटपुट प्रोवाइड करिवो डाटा प्रोसेस होबा परे जो इंफॉर्मेशन यूजर बुझी पारे दैट इज आउटपुट क्लियरली बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करंतु व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एक्स आफ्टर सिलेक्टिंग सम सेल्स इन एक्सेल जते बेला आपण कंट्रोल एक्स को प्रेस करिवे ताले कोन होबो कहंतु जते आपण कंट्रोल एक्स को प्रेस करिवे कोन होबो व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एक्स कोन हिजबो व्हिच ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन ए है राइट आंसर द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल डिसअपियर फ्रॉम द सेल एंड गेट स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड ओके ऑप्शन ए है राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 which of the following describes how to select all the cells in a single column which of the following describe how to select all the cells in a single column रे आपण सेल को सिलेक्ट करिवे all the cell को सेति भाई लेफ्ट क्लिक ऑन द गोटे ग्रे कॉलम टाइटल बटन को दिबे ऑप्शन सी हबो राइट आंसर ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड स्मार्टफोन्स are the most widely used handheld computer is your right answer option A habo your right answer। next if you need to edit header and footer माने होछि गोटे डॉक्यूमेंट रो बा गोटे पेज रो टॉप रे थिबा मार्जिन को हेडर को जाय एवं बॉटम रो थिबा मार्जिन को फुटर को जाय ताले हेडर एंड फुटर को एडिट करबा पई ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो 2007 वर्जन और ऑनवर्ड्स किबा ताठारु नेक्स्ट वर्जन जाबि रहिछि व्हिच मेन्यू टैब शुड यू एक्सेस ताले देखो तू आपण insert tab को जाई कि header and footer option को edit करि परिबे option ए है राइट आंसर। which is the default format for saving a word document in MS Word 2007 or above जे कोनोसी भी गोटे word document रो different इट कोन कहिछि डिफॉल्ट फॉर्मेट कहिछि तो डिफॉल्ट फॉर्मेट पाई docx यूज करा जाय दैट इज फाइल एक्सटेंशन जाको कहै छै docx है राइट आंसर। find and replace utility is available in find and replace ता आपनकर word रे available रहिछि excel रे रहिछि and powerpoint रे रहिछि means all of the above is your right answer option D है your right answer मन रखंतु all of the above is your right answer। next what is the formula for adding cell A1 and A2 in MS Excel आपण A1 cell को एवं A2 cell को कोन करिवे ऐड करिवे सिंपली देखंतु इक्वल सहित A1 plus A2 रो रेंज को नेबे इज ऐड हबो। Which command will you choose to convert a column of data into rows in MS Excel? It means कोन से को column रो डाटा को आपण रो रे रखिया पई सेति पई edit जिबे then paste special then transpose करेबे transpose करले आपण को जहा भी column रो डाटा रो रे आसीबो। To select one hyperlink after another during a slide presentation what do you press देखंतु एठी कहला hyperlink तो जानि कंट्रोल के hyperlink हबो बट आपण hyperlink को सिलेक्ट करूछंती one hyperlink after another माने कोन हला आपन दुईटा स्लाइड और दुईटा टैब जहा भी किछ ओपन हबो देन आपन व्हाट डू यू प्रेस देन यहाँ पर आपन टैब की प्रेस करि परिबे ऑप्शन ए टैब को यार राइट आंसर। यो नेक्स्ट बा व्हिच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए पावरपॉइंट वेरी इंपोर्टेंट न्यू स्लाइड माने कंट्रोल एन हबो नाही ऑप्शन बी हबो राइट आंसर न्यू स्लाइड को कंट्रोल एम जरिया रे इंसर्ट करा जाय। नेक्स्ट which of the following is correct प्रथमे कोन आसीबो आपनकर किलोबाइट देन यहाँ पर मेगाबाइट देन बाइट देन बिट मींस बिट होची डाटा रो स्मॉलेस्ट यूनिट देन यहाँ पर बाइट आसीबो देन मेगाबाइट आसीबो देन किलोबाइट ओके तो एमिति हबो आपनकर राइट आंसर क्लियर। बिट किलोबाइट मेगाबाइट नो एटा भी भूल अछि आपनकर प्रथमे आसीबो कोन ऑप्शन बी आल्सो भूल अछि प्रथमे आसीबो बीट हम जानि चंदी प्रथमे बीट आसीबो देन यहाँ पर आसीबो कोन बाइट पर आसीबो आपनकर किलो बाइट
ଏହା ପରେ आसीबो आपनकर मेगाबाइट ओके एटा हबो सीक्वेंस प्रथमे मेगाबाइट बीट पर जिगाबाइट आसीबोनी फॉलोइंग करेक्ट बीट पर किलोबाइट मेगाबाइट देन बाइट एटा नन ऑफ दिस हबो राइट आंसर ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर ओके बिकॉज़ प्रथमे बीट आसीबो देन बाइट आसीबो देन किलोबाइट देन मेगाबाइट देन आपनकर जिगाबाइट देन आपनकर टेराबाइट एमिति थाए सीक्वेंस टी सो नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर ओके और के ऑप्शन ठीक अछि कि नाही सीक्वेंस अनुसार जदि हम देखिबा नाही so none of these is your right answer next question number 35 देखंतु the term QWERTY keyboard means the keyboard layout of dash alphabetic characters first 6 alphabetic characters found on the top row of keys displaying letters option A हबो यार right answer okay QWERTY एटा कोन कीबोर्ड रे थिबा प्रथम 6 टी लेटर अटे next which of the following can be used to animate how the presentation moves from one slide to next गोटे स्लाइड रु नेक्स्ट स्लाइड को जते बेले गोटे प्रेजेंटेशन गोटे स्लाइड मूव करूची जहा इफेक्ट आसीबो सेति पई ट्रांजिशन को यूज करे दे ट्रांजिशन से हो यार राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट प्रोसेस शुड बी यूज्ड टू recall a document saved previously it means कोन आपण ऑलरेडी सेव करछन सेटा ओपन करि परिबे ऑप्शन सी हमर राइट आंसर ओपन वी कैन से नेक्स्ट the main circuit board of the system unit is system unit रे थिबा main circuit board को कहा जाय motherboard और एटा को पीसीबी मध्ये कहा जाय printed circuit board मध्ये कहि परिबा next bluetooth is an example of bluetooth कोन गटे wireless personal area network गटे ऑप्शन ए हमर राइट आंसर wireless personal area network next if a new device is attached to a computer such as printer or scanner its dash must be installed before the device can be used अपन को यार ड्राइवर को इंस्टॉल करियार अछि प्रिंटर स्कैनर रो सो दैट अपन हार्डवेयर को एक्सेस करि परिबे हार्डवेयर डिवाइस को यूज करि परिबे यू मस्ट इंस्टॉल द ड्राइवर फर्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मालवेयर निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक मालवेयर हेबो नाही व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर व्हाट इज मालवेयर मालवेयर माल रो अर्थ होची दैट इज हार्मफुल and where होची that is गोटे प्रोग्राम और गोटे सॉफ्टवेयर इट मींस जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर को हार्म पहुंचे that is malware ठीक अछि malware कोन बुझियला इट मींस malware आपन को कंप्यूटर को क्षति पहुंचाइबो that is malware ताहले निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक malware हेबो नाही वायरस तो गोटे malware रो कैटेगरी रे आसीबो worm also गोटे malware रो कैटेगरी रे आसीबो एंड ट्रोजन हॉर्स आल्सो गोटे मालवेयर रो कैटेगरी रे आसी जिवो किंतु फायरवॉल हबो नाही फायरवॉल रो काम होची आपन को सिस्टम को प्रोटेक्ट करेबो इट मींस अनऑथराइज्ड फाइल को एक्सेस होबा पई देबो नाही दैट इज फायरवॉल रो काम तो फायरवॉल गोटे मालवेयर न ठीक अछि परीक्षा रे आपन प्रश्न रहइबो वायरस रो फुल फॉर्म कोन हेबो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज मन रखो एंड वायरस एंड वर्म ए दुटा भितर डिफरेंस कोन virus and worm self replicate हेबे it means itself से माने reproduce हेबे that is user interaction and without user interaction रे also तो एटा होची virus and worm क्लियरली बुझियला like that आपनकर trojan horse मध्ये गोटे malware क्लियर नो डाउट ऑप्शन सी समस्त चूज करछंती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करंतु what is the shortcut key to switch between open applications in windows एठी विंडोज माने होची दैट इज विंडोज रो ऑपरेटिंग सिस्टम रे आपण स्विच करिवे ओपन एप्लीकेशंस जहां भी आपनकर एप्लीकेशंस ओपन अछि ए एप्लीकेशन मध्ये आपण स्विच करिवे ठीक है ऑल्ट सहित टैब की को प्रेस करा जाय ऑप्शन ए हेबो हेरो राइट आंसर समस्त चूज करछंती ऑल्ट प्लस टैब की मने रखंतु नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन निम्नलिखित मध्यरु केउटा हेबो ऑप्शन बी फिंगरप्रिंट स्कैनर गोटे कोन हेबो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होइछिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एआई कांसेप्ट enables machines to understand human speech निम्नलिखित मध्यरु केउ एआई कांसेप्ट जरिया रे मशीन कोन करि पारुची ह्यूमन रो स्पीच को बुझी पारुची तो सही कांसेप्ट होची एनएलपी हबो यार राइट आंसर ऑप्शन बी माने रखंतु व्हाट इज फिशिंग कोन कोन हबो फिशिंग कोन
कौन एही फिशिंग परीक्षा आसे आपनकर व्हाट इज फिशिंग फिशिंग होची हा ऑप्शन बी attempting to acquire sensitive information by mass masquerading and trustworthy entity it means आम यहाँ कही परिबा फिशिंग होची हा एमिति किछि फेक वेबसाइट और किछि भी फेक मेल जरिया रे आपणक ठारू आपणकर इनफॉरमेशन को स्टील करिया माने चोरी करि नबा होची फिशिंग ओके माने विथआउट परमिशन रे आपणकर इनफॉरमेशन को अन्य केही एक्सेस करिवो दैट इज फिशिंग सिंपली मन रखन ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोन निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन बी ओराकल हेबो यार राइट आंसर ओराकल ऑप्शंस अनुसार ओराकल होचे एक RDBMS Relational Database Management System. What is the full form of USB? USB रो full form कौन होई जिवो USB रो full form होची Universal Serial Bus. Option A है right answer. Universal Serial Bus. What is primary key? कोंतु database रे अपन करो primary key माने कौन? What is primary key? Okay, try कले primary key कौन? A key that uniquely identifies each record in a table. That is what primary key. Option B is your right answer. Next, which file format is primarily used for web graphics with transparency support? माने कौन transparency रहिबो ता background ता कौन रहिबो कोनोसी wallpapers और image रहिबो नाही that is transparency से तो PNG format यूज करा जाय portable network graphics format को यूज करा जाय. Next, what does SQL stand for? SQL रो full form कौन हो कोंतु SQL रो full form कौन होई जिवो SQL stands for structured query language. Option A है right answer. Structured query language मन रखंतु. In MS Word, which shortcut key is used to create a new document? It को गला new document. New by Control plus N. And existing document को अपन open करि परिबे Control O. Control S save. Control B print. So option A है right answer. Try करूँ तो next question. Which function key is used to start a slideshow in MS PowerPoint? Okay. MS PowerPoint रे आपण slide को show करेबे सेति भाई function 5 को यूज करा जाय. Option B है यार right answer. Function 5 मन रखंतु. In Excel, what is the correct formula to add the values in cell A1 and B1? Add करा जिवो तो add करिवा पई केउ फार्मूला यूज हे परिबो ऑप्शंस अनुसार इक्वल साइन A1 सेल प्लस B1 सेल को add करा जाय परिबो तो एटा आपनकर रेंज रे आसीबो. Which layer of the OSI model handles physical transmission of data? Open system interconnection. त मन रखंतु परीक्षा राशि पारे यार फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रो केउ लेयर रे फिजिकली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हुए दैट इज फिजिकल लेयर. ऑप्शन सी है यार राइट आंसर. नेक्स्ट, which file extension is used for Excel workbooks? कोंतु Excel भाई आपनकर फाइल एक्सटेंशन होची .xlsx. Option C है right answer. .xlsx. Which of the following is an input device? Monitor output, printer output, speaker input. Sorry, mouse input, speaker output. So option C है right answer. Mouse गोटे कोन that is input device. Okay, mouse गोटे कोन हिजो input device अटे. Next, what does DNS stands for? DNS रो full form कोन हेबो कोंतु DNS रो full form हेउचे domain name system. लाइक आपनकर google.com ठीक अछि तो एटी .com कोन होटे domain name system अटे. Next, question number 18. Which software is used to translate high level language into machine code? High level language को machine code रे translate करा जाय compiler use करा जाय assembler also and interpreter also. So all of the above have यार right answer. Next बा which of the following is a volatile memory? कोंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक volatile memory अटे. volatile माने डाटा को से रिटेन करि परिबो नाही जते बेले पावर को कट करि दिया जिवो. So RAM है random access memory गोटे volatile अटे that is temporary memory जाउ अछि. What does GUI stands for? GUI रो full form कोन होई जिवो
GUI ट्राई करंतु GUI रो फुल फॉर्म हेउची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट which shortcut key is used to open task manager in windows task manager को windows operating system रे ओपन करबा पई आपण केउ शॉर्टकट की यूज करंती कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर टास्क मैनेजर ओपन हेबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिसाइकल बिन ओके एठी रिसाइकल बिन रो फुल फॉर्म कहै जाउछि और बिकॉज़ ऑप्शन ए रे रहला रिकवरी सेंटर टेम्पोररी स्टोरेज एरिया फॉर डिलीटेड फाइल्स देन फाइल बैकअप सिस्टम नन ऑफ दिस तो एटा करंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म नो तो एटा को आपण एमिति करंतु व्हाट इज द वर्क ऑफ रिसाइकल बिन माने रिसाइकल बिन रो काम कोन गोटे कंप्यूटर सिस्टम रे दैट इज हबो ऑप्शन बी टेम्पोररी स्टोरेज एरिया फॉर डिलीटेड फाइल्स ठीक अछि जहां भी आपण डिलीट करिवे जदी ओ आपण सेटा को कोन करना परमानेंट डिलीट शिफ्ट सहित एंटर शिफ्ट सहित डिलीट प्रेस करिवे दैट इज हबो परमानेंट डिलीट एंड जदी परमानेंट डिलीट हेबो सेटा रिसाइकल बिन को जिवो नाही सिंपली आपण डिलीट को प्रेस करचंदी दैट इज रिसाइकल बिन को जिवो ता टेम्पोररी स्टोरेज एरिया अटे ता पे डिलीटेड फाइल्स पे मींस पुनी थरे रिसाइकल बिन रो चाहिले हमें रिस्टोर करि परिबा which tool in windows checks for file system errors windows रो केउ टूल जरी रे आपण फाइल सिस्टम एरर को चेक करि परिबे दैट इज ऑप्शन सी CHKDS के मन रखन दैट इज होची आपनकर टूल द्वारा आपनकर कोन करि परिबे विंडोज फाइल सिस्टम रो एरर को चेक करा जाय पारे व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम इन विंडोज 10 कोंतु डिफॉल्ट फाइल सिस्टम रहउची NTFS न्यू टेक्नोलॉजी रो फाइल सिस्टम ता आपनकर डिफॉल्ट थाए जेतले आपण फॉर्मेट करंती फॉर्मेटिंग मींस इंस्टॉल करंती विंडोज रो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो NTFS रो फाइल सिस्टम रे ही इंस्टॉल करा जाए जनरली नेक्स्ट which windows utility is used to manage startup program कोंतु startup program को मैनेज करिया पे केउ विंडोज यूटिलिटी को यूज करा जाए दैट इज आपनकर टास्क मैनेजर ऑप्शन बी टास्क मैनेजर इज योर राइट आंसर which protocol is used to send emails to SMTP रो फुल फॉर्म कोन आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे ओके एटा सेंड करिया पई IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 को यूज करा जाए और रिसीविंग पाई देन आपण कमेंट सेक्शन रे जणांतु SMTP रो फुल फॉर्म कोन हेबो which device connects multiple networks and routes data packet between them routes रो कथा असला माने दैट इज राउटर को ही यूज करा जाए ऑप्शन सी राउटर हेबो राइट आंसर नेक्स्ट which folder contains user specific temporary files in windows यूजर स्पेसिफिक टेम्पोररी फाइल को परसेंटेज टेम्प परसेंटेज रे आपण शो करै परिबे आपण रन कमांड को जिबे देन परसेंटेज टेम्प पुन थरे परसेंटेज एंटर करिवा परे आपनकर यूजर स्पेसिफिक टेम्पोररी फाइल सब शो हेबो देन यू कैन डिलीट इट नेक्स्ट व्हाट इज रजिस्ट्री इन विंडोज कोंतु विंडोज रे रजिस्ट्री रो काम कोन रजिस्ट्री होची गटिए डाटाबेस दैट स्टोर्स इंपोर्टेंट सिस्टम रो सेटिंग सहित यार कॉन्फ़िगरेशन को आपण रजिस्ट्री रे पाइबे नेक्स्ट which windows utility helps in managing disk partition ट्राई करंतु डिस्क को पार्टीशन करिवा पई आपण केउ विंडोज यूटिलिटी को यूज करंती डिस्क को पार्टीशन करिवा पई आपण डिस्क मैनेजमेंट को यूज करंती ठीक अछि ऑप्शन बी डिस्क मैनेजमेंट हो यार राइट आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF ट्राई करिवा PDF रो फुल फॉर्म कोन होई जिवो PDF रो फुल फॉर्म होउची पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑप्शन ए हो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज योर राइट आंसर नेक्स्ट which key combination locks your windows computer ओके आपण को कंप्यूटर को आपण लॉक करिया पई विंडोज की सहित L को प्रेस करंती ऑप्शन बी योर राइट आंसर which file extension is associated with a compressed folder ट्राई करंतु compressed folder पई केउ फाइल रो एक्सटेंशन को यूज करा जाय दैट इज .zip माने रखतो compressed पई आपनकर दैट इज एक्सटेंशन व्हाट डज JPEG स्टैंड्स फॉर JPEG रो फुल फॉर्म कोन हम कहबा JPEG रो फुल फॉर्म होची जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप ऑप्शन ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप है राइट आंसर व्हिच कमांड इन CMD क्लियर्स द स्क्रीन CMD पई आपनकर CLS कमांड को यूज करा जाय ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट which of the following is an output device scanner input plotter output keyboard input mouse input so option B plotter habo yara right answer
नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड मास्टर इन ए पावर पॉइंट ट्राई करंतु स्लाइड मास्टर अवेलेबल रही आपनकर व्यू टैब रे एमएस पावर पॉइंट रो व्यू टैब रे देन यार पर्पस ऑप्शन अनुसार जे देखिबा सी ठीक लागै टू मैनेज ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट को कंसिस्टेंसी भाबरे ओके इट मींस आपण मैनुअली मध्ये स्लाइड को फॉर्म करि परिबे राइट तार लेआउट को आपण तयारी करि परिबे नेक्स्ट व्हिच शॉर्टकट की ओपन्स द रॉ डायलॉग बॉक्स इन विंडोज विंडोज आर ओके विंडो की प्लस आपनकर आर की जाको स्टार्ट की मध्ये कोआ जाय which excel function returns the current date and time पे आपण now function यूज करा equal sign then now function को यूज करा जाय आज लास्ट क्वेश्चन which feature in ms word allow you to apply formatting to multiple location quickly which feature ms word allow you to apply formatting को apply करिया पई format painter को यूज करा जाय देन कोन कोन हे परिबो ई formatting एटी formatting रो कथा कहला formatting रो अर्थ होचे हा गोटिए टेक्स्ट रो से टेक्स्ट रो स्टाइल हे परिबो तार साइज हे परिबो एवं तार कलर हे परिबो दैट इज व्हाट फॉर्मेटिंग